फास्टेस्ट क्रिकेट स्कोर अपडेट्स या सबसे डिटेल्ड स्टैट्स, क्रिकेट के अंदर बाहर की खबरें या हेल्दी डिबेट्स, सबसे एक्यूरेट एनालिसिस या फैंस का क्रेज, सबके लिए एक ही प्लेटफॉर्म, क्योंकि क्रिकेट मतलब क्रिकेट नेक्स्ट. Hello everyone, you're watching Cricket Next. I'm Surama Kaushik. Another session, another time to talk about India's innings and South African bowling. Well, the session was really interesting because four Indian wickets and all to only one bowler, Kagiso Rabada. Well, let's hear it out from Soumya Kapoor, Bansal Shah. What are their thoughts on it? And we also have with us Thakur. Soumya first up Shreyas Iyer, then Virat Kohli, then Ashwin, then Shardul Thakur. It felt like that wickets were just tumbling down and were getting all to the bank of Kagiso Rabada. First of all, how brilliant Rabada's bowling was today. He has been a terrific bowler for South Africa. 500 international wickets, across formats. Another fifer in the kitty in this format. He has been an exceptional bowler for South Africa over the years now. But again, I have been saying this all through the day that it has been the application, the dismal application of the Indian batters in this match in the first innings. When you know that the little moment is there, when you know that someone is his caliber is bowling in those lines and lengths, bowling full Yeah. just outside of, why do you just need to poke your bats? I don't understand that. You know, b- the only delivery that was probably unplayable was for the Virat Kohli wicket. That just feathered it through the outside edge, and it was a good catch. Apart from that, I don't understand the logic behind just going after the bowlers, and this has been the case right from the word go. Rohit Sharma, the way he got out, and then someone like a Shubman Gill, also like a Yashasvi Jaiswal. The problem has been from the first session itself. आप सिर्फ किसी तरीके से रेस्क्यू कर रहे थे विराट कोहली एंड श्रेयस अय्यर के थ्रू, courtesy of their good partnership in the first session, वरना वो 80 पे 50 पे 5 हो गया था. उन लोग की कैचेस ड्रॉप नहीं होती तो वो 50 पे 5 हो गया था. दिस हैज बीन अ horrible application from the Indian batters. Yes, it's a great spell of bowling from Kagiso Rabada. Nothing taken away from him, the way he bowls. But again, you know how lethal he is. You know how dangerous he is on his day, and he's throwing it up. I mean, Shardul Thakur, why do you need to play that kind of a stroke? You are there in the team. You talked about that you can provide that batting depth, and Yeah. then you get out after getting settled down, and you were playing your shots. It wasn't Yeah. Shardul was going to stay there and take the innings deep. No, he was playing his shots. He got hit once for playing that full stroke. It's Yeah. just disappointing application from the Indian I batters. I think that was that Shardul didn't want to take more blows on his body. That is why he started to hit those shots. No, you don't need to. Why are you going for those drives when you know that ball is doing a bit? Just moving it away from the right hander. The ball's pitched outside off. You don't understand this. Yeah, actually, from the very beginning, India's batting didn't go well. Dharmendra, we saw Indian openers; they didn't perform well, and the top order, Nandenberger got good wickets, and then obviously Rabada did the job for the South African team, and I would say that he has already done the job for a South African team because he got 5 wickets. But if I talk about batting, all the reviews that I can read right now, all the comments that I heard from the commentators, everybody is saying that it's not easy to bat there. But then you really need to put your skills and you really need to have patience while you're batting in those South African conditions. Now, apart from KL Rahul, it didn't seem that all the batters were playing with that intent and playing patiently. And even now, if we see the batting scorecard, KL Rahul is the only batter who has scored highest runs so far. 39 he has made so far, and he's the highest run scorer for Team India. How difficult did you find batting over there, and what KL Rahul can do for Indian team right now? I think this is the same story again, सुरम्या. आप every time you see at South Africa tour, पता नहीं इनके कुछ माइंड में होता है ये. I understand. ऐसा नहीं है कि difficult condition जो South Africa में कोई आज नया first time ऐसा हुआ है. Look at the application of captain
रोहित शर्मा को देखो कैसे आउट हुए हैं, कैसे वो पुल करके। मुझे लगता है व्हाट आई थिंक लाइक जो ओडीआई वर्ल्ड कप में जो थे ना, उस माइंडसेट से ये आई डोंट थिंक जो बैटिंग आज मैंने देखी, मुझे नहीं लगता कि ये प्रिपेयर्ड है इसके लिए, टेस्ट सीरीज के लिए इस तरह से आए हैं। क्योंकि द वे रोहित शर्मा गिवन अवे हिज विकेट, मैं ये नहीं कहूँगा कि आउट हुए हैं कोई ऐसे। एक्चुअली सौम्या ने सही बोला कि ऐसा है कि ऐसा नहीं था कि एक विराट कोहली या फिर कह लो कुछ हद तक श्रेयस अय्यर का बॉल भी इस तरह से अचानक आई, वो भी सरप्राइज रह गए। अदरवाइज आप दोनों जो ओपनर हमारे जिस तरह से आउट हुए हैं, या फिर इवन गिल, सुमन गिल ने बहुत डिसअपॉइंट किया है, तो उनसे बड़ी उम्मीदें थी। एक्चुअली अभी लग रहा था कि अब समहाउ आई डोंट नो वेदर दे आर रेडी फॉर टेस्ट क्रिकेट और नॉट। मतलब कहना पड़ता है, इसलिए कहना पड़ता है कि आपका जो पूरा फोकस ही हो गया है T20, या तो फिर आप T20 में या वनडे में ओडी वर्ल्ड कप के बाद आप खेलने आ रहे हो। लेकिन बहुत डिसअपॉइंटिंग थी मैच बैटिंग। आप देख लीजिए साउथ अफ्रीका का एक हमेशा हमारे लिए एक वो रहा है कि आज तक हम कभी वहां पे टेस्ट सीरीज नहीं जीत पाए हैं। अगर आप इस पूरी टीम को देखिए, साउथ अफ्रीका की इस टीम को दे, रबाडा नो डाउट, रबाडा इज अ वेरी गुड बॉलर। और साउथ अफ्रीका टीम में कोई ना कोई एक ऐसे फास्ट बॉलर होता है जो बहुत ही अच्छा होता है। लेकिन अगर ओवरऑल टीम को देखोगे तो मुझे नहीं लगता कि इससे कोई कमजोर टीम आपको कभी मिलेगी। टेस्ट सीरीज, अगर टेस्ट क्रिकेट की बात करें, तो मुझे लगता है कि अभी जितनी भी मैंने वहां पर टीम गई है और जितनी टीमों को हमने अब तक देखा है, उसमें सबसे कमजोर टीम मुझे वीकेस्ट टीम में दिख रही है साउथ अफ्रीका की। बावजूद इसके अगर इंडियन बैट्समैन का अगर ये हाल है कि आप पहले दिन अगर आप 200 रन बनाने के लिए स्ट्रगल कर रहे हो, और आपके जो टॉप बैट्समैन हैं जो सारे वो इस तरह से आउट हो रहे हैं, वेरी वेरी डिसअपॉइंटिंग। ये बड़े अच्छे, मतलब इसको कहते हैं ना कि इट्स नॉट अ वेरी गुड साइन, इट्स नॉट अ वेरी गुड साइन। Yeah, definitely. It's not a good sign, and I would actually say it's a very poor sign, Soumya, because after that World Cup defeat, everybody was expecting Rohit and Virat to play really well because they didn't play the white ball series, and they clearly mentioned how important this series is for them. Rohit in presser said that he'll be looking forward to really play well, and all the teammates are looking forward to play well because this series victory will matter a lot to them. They are desperate to win. But do you think that with this kind of batting, they can even think of winning this series? I know it's very, very early. I mean, we are just 3 sessions done. But do you think that with this kind of batting, we can even go further in this test series? You know, it's not just about Ramya this series. You need to understand this because you are not really playing a lot of Test cricket at home. Yes, you are playing. You're playing England in 5 games, and then you have a couple of more series lined up. But again, WTC points आपके पास अब कब लोगे? अगर आप इन 2 मैचेस में नहीं WTC पॉइंट्स ले पाते, then it's going to be very very difficult for you to make it to the WTC final. Exactly. Why are Yeah. not understanding this? Why the team management doesn't have a proper batter? Okay, you have taken Eastwaran in the squad. I don't understand. Eastwaran is just traveling with the Indian team. Why is he not making his debut? When you don't want to play a Rahane, when you don't want to play a Pujara, why are you just making him travel? I don't understand this. He's always in the squad, but he's not playing the games. Your India has traveled to play South Africa, but you don't have a regular batter to get into the side. I mean, Yeah. that's hilarious in itself. And Chetan Bhai has been saying this time and again, and he's been very on point about this कि आपके पास batting unity नहीं है यार. Yeah. Okay, let's suppose, God forbid, two of the batters get injured. What are you gonna Yeah. do? You're gonna get a Sarfraz Khan in the lineup, or probably a Pradosh Ranjan Paul in the lineup? Are you seriously telling me that who is just one Ranji season old? I mean, what kind of a thought process is going around in the team? And you can't listen. If you want to make a stable team, if you want stability in the side, you can't please everyone. You need to take some steps. And this is not the batting lineup you can go in with. You can't have three inexperienced batters to play in South Africa, no matter what the condition is, no matter how weak is the opposition. You look No, at the line. you are right there, Soumya. Just look at the overcast conditions, और South Africa ने 2 लेफ्ट आर्म पेसर खिला दिए. They gave the cap to this guy They Burger. gave this to Burger, Nandra Burger. But
I mean, Yeah, and actually they are. So you mentioned two things here which are very, very important. First up, you talked about the WTC points. South Africa, any which way, they play very few test matches, and they clearly mentioned before this test series that they really want to bank on this opportunity of playing against India, and they want to gain those points because if you compare South Africa with the other teams, they don't play as many test matches as other teams do, especially teams like England and Australia. So they're really desperate to win this test series. Second, obviously, they know that they have been undefeated on their home soil. So that's why they'll be looking forward to continue the momentum and actually the legacy of winning on their home soil in the test series against India. And you mentioned the point of giving this cap to Nandre Burger. Now, from the very first over, and I remember that behind the cameras, we were saying that, look at the happiness, look at the zeal with which he was bowling, and it felt that he was totally into it. It mattered to him a lot. While if we look at the Indian side, Bansal, we have this playing 11 in front of us, and we know that it's been just batting, but somewhere or the other that intent was missing, don't you think so? Obviously, I know that Rohit, Shuman, I'll actually count Shuman also experienced in terms of he has played a lot of test matches. All these players, it didn't seem that they were in their shoes today. Actually, yeah, I think what you said is exactly right. It seemed like they're lacking intent in sorts of the thing that they are not willing to stay at the crease for a longer period of time. मतलब सब लोगों को shots ही मारने थे. What Soumya said earlier, they are not able to hold their shots back, except for Virat Kohli again. And also I felt कि श्रेयस अय्यर का ball भी काफी अच्छा था. It was a good delivery from Rabada to play against. बट वो भी जिस तरह से लंच के पहले भी जिस तरह से श्रेयस अय्यर खेल रहे थे, इफ यू सी कपल ऑफ कैचेस वर ड्रॉप्ड, कपल ऑफ बॉल्स fell short of the fielders. So it was not that he was putting a price on his wicket and playing very cautiously. He was hitting his shots, he was playing his shots, and he was surviving till the lunch break. But lunch break के बाद तुरंत ही वो out हो गए. तो I would have wanted a year as well कि थोड़ा ज़्यादा ध्यान से खेले, थोड़ा लंबा पारी खेलने का कोशिश करे, considering that we had lost 3 early wickets. So Yeah. that is, I think what you said is exactly right. I'm just adding, Dharmesh, हाँ. I'm just adding one thing. जो सिचुएशन है, जो जिस तरीके से पिच खेल रहा है, जितना एक्सपीरियंस इन लड़कों को है और जिस तरीके की बॉलिंग हुई है, हमारी सिर्फ 2 विकेट गिरनी चाहिए थी. दैट वाज जायसवाल एंड शुभमन गिल. आई विल स्टिल गिव इट टू देम. ठीक है, अर्ली स्टार्ट, अर्ली एजेस इन देयर करियर, फाइन. रोहित I शर्मा, think रोहित शर्मा's wicket, you know, I don't know, we just don't talk about it. We just don't talk about his mistakes. I don't know why. I think right, रोहित शर्मा का हर बार इस तरह से विकेट जाना तो ऑब्वियसली सही नहीं है. बट आई थिंक वी शुड आल्सो स्टॉप सेविंग शुभमन गिल, सेइंग दैट कि अभी अर्ली स्टेज है, उसके करियर का अर्ली स्टेज है, बिकॉज़ ही हैज प्लेड क्वाइट सम टेस्ट्स एंड That was a bad Yeah. stroke. The try to just just make it go down to the final leg. That was a bad stroke. I'm not saying that, but I'm just saying it's okay. I would still give it to him. Take your time. That's fine. But Rohit Sharma has played plenty of cricket. Even Virat has played a lot of cricket. Yeah. ये मेंशन भी नहीं करना चाहिए हमें. इस समय सिर्फ 2 विकेट गिरनी चाहिए थी, and our score should have been around 180, 190 for 2, not 7. Makes no Yeah. sense. true. No, you both are totally right, and I somewhere or the other agree with Bansal where he said that why we should exclude Shubman Gill. We should also bring Shubman Gill into that bracket of cricketers where we are questioning that why they are not able to perform in South African conditions, or why aren't they able to perform in all these test series, or for that matter all other formats as well. That means, don't you think so? This is like a recap of what happened in 2021, because KL Rahul was the one who scored more than 100 runs, 120 odd runs in 21 when India visited South Africa. Well, the result was in India's favor so far on first day till this tea break. It doesn't seem so that Team India will be leading this test match. But don't you think so? It's the same story again that has been happening from what, past 3 decades? Yeah. That's why I pointed, and Soumya rightly pointed out
किस टाइप की बैटिंग अटैक है यार, जब आपको पता है कि हर बार आप साउथ अफ्रीका में स्ट्रगल वैसे ही करते हो वहाँ की कंडीशन में, तो आप कैसे इतने इनएक्सपीरियंस बैटिंग लाइनर आप देख लीजिए रोहित शर्मा का, मतलब मुझे पता नहीं क्यों, मैं तो अभी भी इस बात से मुझे लगता है कि रोहित शर्मा टेस्ट कैप्टन हैं क्यों। उनका इंटरेस्ट देखिए ना, किस तरह का इंटरेस्ट टेस्ट क्रिकेट में लेते हैं, वो रेड बॉल से उनका इंटरेस्ट नहीं है। और जिस तरह से देखिए क्या होता है कि किसी आप सीरीज का पहला मैच है और आप कैप्टन हो, टीम के कैप्टन हो, और आप पुल करके ऐसे विकेट दे रहे हो, आप वहीं से आपका गेम देखिए क्या होता है, बाकी प्लेयर्स के लिए ना आप वहां से वो खत्म हो जाता है। फिर जब कैप्टन इस तरह से लापरवाही अगर इतनी इस तरह से अगर बैटिंग करेंगे, तो आप इन एक्सपीरियंस बैट्समैन को क्या वो करो। यशस्वी जायसवाल आपके हैं, नए बैट्समैन हैं, उसके नीचे शुभमन गिल भी चलो हैं, अभी थोड़े समय से खेल रहे हैं, उनको भी वो नहीं मिलना चाहिए, अब तो वो आईपीएल टीम में कैप्टन भी बन गए हैं वो। लेकिन मैं भी हैरान हूँ इस बैटिंग लाइन, जिस तरह के बैट्समैन लेके गए हैं। सीरियसली अगर कोई एक दो प्लेयर इंजर्ड हो जाता, जैसे आज जिस तरह का आज बॉलिंग अटैक किया, आपने देखा होगा किस तरह शार्दुल ठाकुर को गेंद पहले हेलमेट में लगी, उसके बाद फिर उनके हाथ में भी लगी है, और जिस तरह से गेंद इधर उधर काफी ऊपर आ रही है, तो हो सकता है बड़ी बात नहीं है कि इस मैच में आपके कोई बड़ा बैट्समैन अगर इंजर्ड हो जाए, तो आपके पास रिप्लेसमेंट के लिए सोचना पड़ेगा, कौन बाहर बैठा हुआ रिप्लेसमेंट करने के लिए। ये एक्चुअली मुझे लगता है कि जिस तरह का प्रिपरेशन या इस टेस्ट सीरीज के लिए है, मुझे लगता है कि बहुत सीरियस है इसको लेकर के। यार टीम मैनेजमेंट पता नहीं क्या सोचेगा कि चलो यार टेस्ट सीरीज जाकर खेल लेते हैं, ऐसा मुझे वो दिख नहीं रहा है, क्योंकि जिस साउथ अफ्रीका में आज तक आप टेस्ट सीरीज जीते नहीं हो, मुझे लगता है अगर इफ आई एम नॉट रॉन्ग 2010-11 जहां पर आप 1-1 ड्रॉ करके आए थे, फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था जब बिना हारे हुए लौटे हो टेस्ट सीरीज में आप, उसके बाद हर बार हार के लौटे हो आप, जब आपका बेस्ट चांसेस होता है तब भी आप हार के ही आते हो, वहां से आते हो। तो ये पूरी तरह से ये हो गया कि बॉलर पर आपने छोड़ दिया कि आपके बॉलर्स को आकर के चमत्कार कर देंगे, बैट्समैन रन नहीं बनाएंगे, आपके बॉलर्स आएंगे और साउथ अफ्रीका को जल्दी आउट you can't. करके। ये बात कहीं से जमती नहीं है, बैट्समैन को कहीं ना कहीं पे लेना पड़ेगा। और मुझे नहीं लगता है कि जो इतने सालों से वहां पर खेल रहे हैं उससे उन्हें कोई लेसन लिया हो। जिस तरह की बैटिंग कर रहे हैं, कुछ भी इसमें इंप्रूवमेंट मुझे नहीं दिख रहा, सेम स्टोरी, वही हर बार वही सेम स्टोरी चल रही है इनकी। एंड दिस इज नॉट सम एफटीपी आपको पूरा करना है कोई वनडे सीरीज Exactly, बायलेटरल यार, दिस इज WTC, दिस इज अ पार्ट ऑफ WTC साइकिल, दैट्स इट। आई डोंट अंडरस्टैंड हाउ डिफिकल्ट इट इज टू अंडरस्टैंड। दो WC फाइनल ऑलरेडी हार चुके हो आप, फाइनल बैक टू बैक हारे हो, तब ये हाल है कि आप किस तरह से आगे देख रहे हो टेस्ट क्रिकेट को। नहीं, और वही बात मैंने कहा भी पहले कि ये जो WTC का साइकिल है, इसमें ये पहली टेस्ट सीरीज है जो साउथ अफ्रीका खेल रही है, और वो क्लियरली उनकी तरफ से नजर भी आ रहा है कि हाउ डेस्परेट दे आर टू विन दिस सीरीज। और हमने कल के लाइव शो में भी ये बात करी थी कि साउथ अफ्रीका मार्च के बाद अब खेल रहे हैं टेस्ट सीरीज, एंड दे आर लुकिंग फॉरवर्ड टू विन दिस सीरीज। दे आर नॉट जस्ट प्लेइंग फॉर द सिक ऑफ इट. So that intent is quite visible in all these South African bowlers, and for that matter, all other players as well. The way they are putting themselves on the ground. Well, the session post tea has begun, and let's see what happens in this session. I just add one last thing. The team management, the captain, the players, whatever it is, they need to understand one thing. Okay. ठीक है, आप बहुत बढ़िया खेले थे वर्ल्ड कप में, आप 10 मैच जीते थे, बट द ट्रॉफी इजंट इन योर कैबिनेट, इट इज़ नॉट। ओके, ठीक है, उसके बाद बहुत सारी बातें हुई, बहुत सिंपैथी मिली, अंडरस्टैंडेबल, ठीक है, मिलना चाहिए, बहुत अच्छा क्रिकेट खेले थे, बट द बॉटम लाइन इज 10 साल हो गए, हमारे पास ट्रॉफी नहीं है। द फैंस नीड अ ट्रॉफी इन द कैबिनेट, दैट्स इट। और आप इतना complacent, I would use that word, this has been a complacent approach from the batters so far, from the Indian team. I was thinking कि जिस तरीके की बातें चल रही थी ना बैकग्राउंड में वर्ल्ड कप हारने के बाद, कि बॉस 300 तो कहीं नहीं जा रहा, because this lineup can do that, but no, this is sheer complacency from the Indian batters. और ये टेस्ट मैच अगर हारेंगे तो बैटिंग की वजह से हारेंगे, बॉलर्स अपना काम करेंगे। मैं अभी भी आज एक बात लिख के दे रहा हूँ, इन नेक्स्ट 2 days बॉलर्स अपना काम अभी भी करेंगे, दे विल पिक विकेट्स, लेकिन आप रन तो लगाओगे ना यार, आप उनको 250 रन तो दे दो डिफेंड करने के लिए। हाँ, कुछ डिफेंड करने के लिए कुछ होना भी तो चाहिए ना बोर्ड पर, वो सबसे बड़ी बात है। 2018 as well कि स्कोर बोर्ड पे रन्स ही नहीं थे जब हमारा बॉलिंग। वही सेम स्टोरी अगेन एंड अगेन ना बंसल, हर बार आप, बिकॉज आपने रहाणे को बिठा दिया था, आपके डिसीजन गलत थे यार, बात खत्म। आज भी आपके वही डिसीजन है। आप आज इस बार स्क्वाड में बैट्समैन लेके गए, हाँ स्क्वाड में बैट्समैन था, आपने उसे बिठा दिया था, दैट्स इट।
That's the whole point. मुझे लगता है कि WTC के फाइनल से लेकर अब तक इतने महीने गुजर गए हैं इसके बीच में, लेकिन वो डिस्कशन कि आपने अभी तक प्लेइंग 11 प्रॉपर नहीं किया है, आपने अपनी टीम फिगर आउट नहीं करी है, वो एक सबसे बड़ा सवाल अभी भी चल रहा है। खैर हम बात करेंगे आज के दिन के खत्म होने पर। लेट्स सी हाउ दिस सेशन प्लेज आउट एंड लॉट इज on KL Rahul once again. I remember 2021, a lot was there on KL Rahul then. Today also a lot is there on KL Rahul. Well, let's see how it goes for KL Rahul now, and let's just enjoy Test cricket. Thank you so much, Soumya, Dharmendra, and Bansal for joining us. फास्टेस्ट क्रिकेट स्कोर अपडेट्स या सबसे डिटेल्ड स्टैट्स क्रिकेट के अंदर बाहर की खबरें या हेल्दी डिबेट्स, सबसे एक्यूरेट एनालिसिस या फैंस का क्रेज, सबके लिए एक ही प्लेटफॉर्म, क्योंकि क्रिकेट मतलब क्रिकेट नेक्स्ट।